such benefits. There is also a special incentive scheme for the SC/ST entrepreneurs also. With this background, I would like to present the main components of the MSME convention. Today is the inaugural, but I will present whatever the 7 components of this MSME convention. The first is this inaugural session will be giving MSME awards. That is one. Then we are also entering into MOUs with the International Chamber of Commerce and the local chambers. We have 3 technical sessions after this. In the morning, we had global conclave of international and national chambers of commerce and industries, and the response was really very, very good. And tomorrow also that will continue. We already have started this vendor development program, MSME exhibition. We already have that. Then we have started, and Honorable Chief Minister has already launched the MSME portal. And we have tried since last 3 months, we are working with various experts, and we are coming up with an MSME draft policy. So that policy will be finalized, and I think that will be helpful to all the decision makers and the industry also. Next. So in this inaugural session in MSME Award, we are giving 8 awards for the manufacturers in 4 categories. Then we are giving 8 exports awards for the exporters who had done very well, they were performed very well. Next. Then we are entering into MOU with Taiwan, TITRA, Gujarat Electronics and Software Association. Then there will be MOU with Taiwan Computer Association and Federation of Association and Government Gujarat. Then another MOU we are entering into Commonwealth Enterprise and Investment Council, Industries and Mines, Government Gujarat, and GIDC. Also Council of Scientific Industrial Research, Indian Institute of Chemical Technology, Gujarat Pollution Control Board, and Gujarat Chamber of Commerce and Industry. There will be another MOU. There are 13 MOUs which are being entered by the Gujarat Chamber of Commerce Industry or the international chambers and national chambers. In inaugural session, we have 3 themes. One is design, technology and management. Then second theme is credit and finance. And third theme is marketing and positioning in global value chains. Experts from Ministry of MSME, IIMA, NID, IIT, MICA, SIDBI, NABARD, Dena Bank, and many more, they are taking part. And a lot of work has been put into that. And I'm sure that you will enjoy that. That session will start immediately after this. As I mentioned, Global Conclave of International Chamber, the first time it has been organized. And let me tell you, आज सुबह में जब हुआ, तो जितने भी बाहर से लोग आए हैं, ये लोगों ने इतना अच्छा आइडिया लगा है कि ये बहुत अच्छा किया है गुजरात गवर्नमेंट ने कि हमको एक प्लेटफॉर्म पूरा दिया हुआ है. इतने इंटरनेशनल चैम्बर, 39 चैम्बर और 180 डेलीगेट्स, और उन्होंने 8 प्रेजेंटेशन हो चुका है. और वो प्रेजेंटेशन में अपना जो उनका जो कॉम्पिटेंसीज है, उनका क्लस्टर का जो है, उनका जो है उनका जो है, और व्हाट दे कैन डू विथ गुजरात एंड इंडिया, वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन किया था. तो ये हुआ. 24 नेशनल चैम्बर भी आए हैं और ये है. नेक्स्ट. इन सर वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली बार सर हमारा ऑलरेडी कल से चालू हो गया है. ऑलरेडी 3221 करोड़ का सर बड़ी कंपनी परचेज करने वाली हैं. ये हमारा फाइनलाइज हो गया है. तो ये 518 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ और 208 कंपनी ने प्रेजेंटेशन किया हुआ है. और बड़ी कंपनी है वो 81 से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी आ गई है. मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होगा. छोटी जो MSME हैं उनके लिए जो उनको बहुत ही मदद होगा. नेक्स्ट, मैंने जैसे पहले बताया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने MSME एग्जीबिशन किया है. मैंने पहले ही बताया कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा डिज़ाइन और थीम बना के यहाँ सबको यहाँ लाए हैं. 50 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड यहाँ है. तो आप वो विजिट करिएगा, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. दूसरे गुजरात गवर्नमेंट के भी सब लोगों ने भाग लिया है. एंड लास्ट में मैं बोलूँगा, हमने गुजरात गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री ने बताया कि एक अच्छा ऐसा पोर्टल होना चाहिए, और वो पोर्टल हमने बनाया है. वो पोर्टल में MSME की गुजरात सरकार की हर स्कीम, भारत सरकार की हर स्कीम, वो स्कीम को हमने फंक्शनली हर चीज़ में कैसे, सपोज किसी को पेटेंट का बेनिफिट चाहिए, किसी को टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन के लिए कुछ चाहिए असिस्टेंस, और मार्केटिंग के लिए चाहिए, तो हर एक्टिविटी वाइज कौन सी मदद मिलती है, कहाँ से, वो पूरा हमने डिटेल दिया हुआ है. और ये हमारे कमिश्नर जो है MSME, वहाँ से ये पूरा लॉन्च कर दिया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने.
तो ये मुझे लगता है कि आप सबको इसका लाभ लेना चाहिए। लास्ट में मैंने पहले ही बताया, एमएसएमई पॉलिसी का एक पेपर का हम लास्ट 2-3 महीने से बहुत प्रयत्न कर रहे थे, और जितने भी एक्सपर्ट है, आईआईएम है, आईआईटी है और एनआईडी, माइका, सबके साथ में बैठ के एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सबका सजेशन, लेकिन मैं ओपन हाउस भी किया था एमएसएमई के साथ में, ये सबका बना के किया हुआ है। तो मैं फिर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, और आप यहाँ आए इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप फिर से मैं बोलता हूं, आप एग्जीबिशन का मुलाकात लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एमएसएमई कन्वेंशन की आज के समारोह की विशिष्ट बात यह है कि एमएसएमई को हमेशा अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ाने वाले और आज भी हम सबको प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट रूप से यहाँ पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी महानुभावों का अभिवादन और स्वागत करेंगे। गुजरात के हमारे एमएसएमई के कुछ ऐसे ही उद्योग साहसिक, और वो भी ऐसे मोमेंटोस से जो उनके उद्योग की प्रतिकृति है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन द स्टेज एटलांटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर नीरल पटेल, वो मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का स्वागत और अभिवादन करेंगे मोमेंटो से, जो है पावर ट्रांसफॉर्मर। गुजरात सरकार हमेशा कटिबद्ध है ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग साहसिकों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए। आज ऐसे उद्योग साहसिक स्वयं यहाँ इस मंच पर आए हैं, उनका आभार दर्शन करने के लिए और उनका अभिवादन और स्वागत ऐसी प्रतिकृति से करने के लिए। ये है मिस्टर नीरल पटेल फ्रॉम एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो उन्हें दे रहे हैं पावर ट्रांसफॉर्मर एज अ मोमेंटो। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। और ये एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जेल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मंच पर आ रहे हैं मिस्टर अनुराग दिलीप कुमार झवेरी, जो माननीय मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी का स्वागत करेंगे। खोडल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मिस्टर यश पटेल एंड मिस्टर तीर्थ पटेल। धन्यवाद। डेंटल इम्प्लांट देकर स्वागत किया जा रहा है अनुराग दिलीप कुमार जी एंड मिस्टर डी के शर्मा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से वो ये प्रतिकृति देकर स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का। डिस्टिलेशन कॉलम है, मोमेंटो के रूप में ये उन्हें भेंट कर उनका स्वागत और अभिवादन हमारे ऐसे ही उद्योग साहसिकों के द्वारा। कैप्शन ट्रैक्टर से मिस्टर सतीश भाई मोवेली, वो स्वागत करेंगे मिस्टर जयेश कुमार रादड़िया, ऑनरेबल मिनिस्टर कोटेज इंडस्ट्रीज। एक ट्रैक्टर वो प्रेजेंट कर रहे हैं और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का ऐसे ही हमारे उद्योग वीर, हमारे उद्योग साहसिक स्वागत करेंगे विविध मोमेंटोस से। Our MSME industrialists are going to welcome all the dignitaries by different mementos, which are specifically designed, and it's a symbol of their industry, their business. आप सभी मंच पर देख पा रहे हैं एक विशिष्ट रूप के मोमेंटोस यहाँ पर तैयार किए गए हैं और सभी महानुभावों का स्वागत हो रहा है। हम सभी भी तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी महानुभावों का इस मंच पर। इट इज एमएसएमई कन्वेंशन इन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 19। सभी मंचस्थ महानुभावों का भी इसी तरह से स्वागत हमारे उद्योग साहसिकों के द्वारा। तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे सभी महानुभावों का। और पहले भी हमने आप सभी को बताया, लेट मी मेंशन इट अगेन, देयर आर मोर देन 43 lakhs माइक्रो एंटरप्राइजेस, मोर देन 5 lakhs स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मोर देन 20,000 मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, जिसमें से 12% एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात। गुजरात में 12% एमएसएमई बिजनेस रजिस्टर्ड हुए हैं।
फैशन इंडस्ट्रीज से लेकर हस्तकला और हैंडीक्राफ्ट में काम करती महिलाओं के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस और ये सारे उद्योग साहसिक यहाँ पर आज इस मंच पे हैं। अभिवादन कर रहे हैं सभी मेहमानों और महानुभावों का। एमएसएमई सेक्टर को अपने भव्य प्रयोजनों से विश्व के फलक पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है गुजरात सरकार। इन सभी उद्योग साहसिकों के लिए ही ये सारे प्रयोजन हैं गुजरात सरकार के, और आज उन्हीं के द्वारा सभी महानुभावों का स्वागत यहाँ पर हो रहा है इस मंच पर। हर एक प्रदेश, हर एक राज्य के विकास के नींव है एमएसएमई सेक्टर। सूक्ष्म उद्योगकार और जिनके द्वारा प्रगति और विकासशीलता पे आगे बढ़ रहे हैं हर एक प्रदेश और राज्य के सभी उद्योग साहसिक। एमएसएमई इज द सेक्टर ऑफ प्रोग्रेसिव गुजरात, प्रोग्रेसिव इंडिया। And now here we are going to present an audiovisual film on MSME Gujarat. Let's have a look. What does nation expect from the government? World-class infrastructure, education for everyone, employment opportunities, and a supportive business environment. And with the great support and vision of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, the country has witnessed some tremendous achievements in many sectors. According to the Union Government, in just 4 years, India's ease of doing business ranking went up from 142 to 77, which shows doing business in India has become a lot easier. Under the able leadership of the Honorable Chief Minister Shri Vijay Rupani, Gujarat has become the most preferred destination for investors and known for good infrastructure and business-friendly policy. The Indian MSME sector generates around 100 million jobs over 46 million units situated throughout the country. MSME sector contributes significantly to the national economy with 38% contribution to the nation's gross domestic product (GDP) and 40% of the overall exports. The sector plays a key role in our economy. Gujarat Industrial Development Corporation has developed more than 1,000 plots in different MSME parks and women industrial parks, and is also developing plug-and-play facility and supreme infrastructure for 10,000 MSMEs in 16 industrial estates. Under various schemes of MSME, the government of Gujarat has released funds of more than 3,000 crore rupees, out of which assistance of more than 1,375 crore rupees has been provided for capital and interest subsidies. The state government has declared an incentive scheme for MSME, benefiting them with capital as well as interest subsidy from 5 to 8%. Recently, the state government announced a textile policy to strengthen the value chain, having interest subsidy from 4 to 6% and power tariff subsidy by ₹3, power looms, LT connection and others for ₹2 per unit consumed. On the 2nd of November 2018, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched an outreach program for MSME sector. According to the Prime Minister, there are 5 key aspects for facilitating the MSME sector. These include access to credit, access to market, technology upgradation, ease of doing business, and a sense of security for employees.
access of credit. Loans of up to 1 crore rupees can be granted in principal approval through this portal in just 59 minutes. Interest subvention of 2% will be facilitated for all GST registered MSMEs on fresh or incremental loans. All companies with a turnover of more than 500 crore rupees must now compulsorily be brought on the Trade Receivables e-discounting system, TREDS. Access to market. All PSUs will now compulsorily procure 25% from MSME, out of which 3% procurement will be reserved for women entrepreneurs. All CPSU will have to compulsorily procure through GEM portal. Technology upgradation. 100 technology centers will be established at the cost of 6,000 crore rupees across India. Ease of doing business. The Government of India will now bear 70% of the cost for establishing pharma cluster. Returns under 8 Labour Law and 10 Union Regulation has to be filed only once in a year. Single content under air and water pollution laws. Returns will be accepted through self-certification and only 10% MSME units will be inspected. Other changes implemented in GST reforms will help MSME to grow faster. Single registration without deposit has been implemented under GST. The GST Council has increased the composition limit from 1 crore rupees to 1.5 crore rupees for small taxpayers. Threshold limit has been increased from 20 lakh to 40 lakh. In all existing policies, net SGST incentives are extended in place of VAT incentives. New composition taxpayers will be required to file returns only once in a year. The tax rate on handicraft products reduced from 18% to 5%. The Union government has accorded high priority to the MSME sector in recent years. The progress of this program is being implemented in a mission mode. This is the beginning of a new era, the beginning of growth and opportunities. This is the vision of MSME for... Thank you. And now we invite Mr. James Hong, Chairman, Taiwan External Trade Development Council, TIATRA, for his speech. The Honorable Chief Minister Rupani, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, good afternoon. On behalf of the Taiwanese delegation, we would like to thank Chief Minister Rupani for your hospitality, and we all feel very much at home. And it's an honor to be here to share with you the success story of Taiwan's MSMEs and how they can be India's best partner for growth and innovations. MSMEs are the building blocks for growth and innovation. In this sense, Taiwan is an innovation hub that's made up of 1.4 million MSMEs. For India and Taiwan, MSMEs will be the pillars of our partnership now and in the future. To facilitate this partnership, my organization, TIATRA, has been working round the clock to bring our MSMEs closer together, and we are firmly committed to this mission. I myself have led business delegations to visit India 10 times in the last 24 months and 6 times to Gujarat. Taiwan has been lauded as a successful economic story, but our success did not come overnight. To give you a better idea, let's see a short video. Please play the video. Never mind. Actually, well, I intend. Yes, it's coming.
sound, perhaps you can see in the video. In the 1950s and 1960s, Taiwan was a poor nation. Most people were working in the paddy fields. In the 1960s to 70s, we started to build up our light industries with our MSMEs. And these photos were taken in 1960s and 70s, where the government launched the slogan that your living room is your factory. That's how we started all our MSMEs in 1970s and 60s. And later on, starting from our MSMEs, we were able to develop our economy into ICT and high-tech oriented economy, and became a major exporting nation in 1980s. And our two nations, although we are far away, but actually we share many similarities in culture, festivals, values, and even life philosophy. And we established an Indian center in Taichung the year before, last year. And so Taiwan is ready. Taiwan is ready to partner with India. Sorry for the lack of the sound effect, but however, as you saw in the video, our journey to growth has been a long one, and it's a journey enabled by our MSMEs. Now, in Taiwan, a country with only 23 million people, nearly 98% of the registered companies in Taiwan are MSMEs. And they created 8.9 million jobs and employ over 78% of the worldwide workforce in Taiwan. And in India, there are now 42 million SMEs and about 95% of the registered companies. So the potential for India's MSME is enormous. Okay. Next page, please. So MSMEs are energetic and creative, and they give rise to Taiwan's unique advantages in the world market. They are the building blocks for Taiwan's world trade, innovation capability, industrial clusters, and global supply chains. For example, Taiwan is among the world's top makers of ICT products and smart solutions providers. Just to name a few, we supply 85% of laptops, 50% of desktops, and 90% of motherboard in the world market. And given our ability to innovate, World Economic Forum recently ranked Taiwan as one of the 4 super innovators in the world, alongside United States, Germany, and Switzerland. So what made Taiwan, a small nation, so competitive on global stage? The answer actually is our vibrant SMEs and their willingness to innovate. All our MSMEs started very, very small, and some of them have grown into global giants. One such company is Foxconn. I'm sure you know the company Foxconn that produces iPhones for Apple. And Foxconn started in 1974 with only a few employees as a family business and only $7,500 to start with. Now Foxconn is the world's largest contract manufacturer for electronic goods, and its annual revenue is $170 billion.
So a small nation like Taiwan, if a small nation like Taiwan can produce a Foxconn, I'm sure with our collaboration, the incredible India will be able to produce many more Foxconns in the future. Taiwanese companies in India are latecomers. Many are SMEs, and some are bigger. They are creating jobs and initiating innovation in India. So, looking forward, there are enormous potential for our partnership. For the last 50 years, Taitra has been transformed our SMEs from pure manufacturer into robust innovations. And we intend to bring our SMEs to work with India. Ladies and gentlemen, India is on the road to its economic greatness and prosperity. We, Taiwan, has traveled the same journey with our SMEs before. So let's work together and build an ecosystem that can speed up your journey. Taiwan is ready. Are you? Thank you. Thank you so much, sir. And now we invite Mr. Prasun Mukherjee, Vice Chairman of Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry, SICI, for a speech on Singapore's cluster approach to MSME. I'll take a very brief time, and I think there are a lot of important people who are going to speak. I wanted to first of all say there is very little introduction, बड़ा कम introduction मैं दे पाऊंगा about Singapore, क्योंकि Singapore तो सब जानते हैं, जितना कोई बम्बई जानता है उससे ज़्यादा तो सिंगापुर जानता है. जिसने अगर एक बार ट्रैवल किया प्लेन में तो एक बार अहमदाबाद से मुंबई चला गया तो अहमदाबाद से सिंगापुर जरूर चला गया होगा. तो कुछ सिंगापुर को इंट्रोडक्शन कराने की तो ज़रूरत नहीं है. But as a country, I must say that it is a $300 billion economy, which may be 1/10 of India. But वहाँ पे आदमी जो रहने वाले हैं वो 3.5 million लोग हैं. तो हमारे यहाँ पे अगर 2000 या 4000 GDP पर कैपिटा है, वहाँ पे तो $70,000 पर कैपिटा है. वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी है. एक मैं आपको एक सिंपल बात से कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम प्रसून मुखर्जी. आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ सिंगापुर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, and I am also the vice chairman of South Asia Business Group of Singapore Business Federation. And we have 20,000 companies in the SBF, and we have 1,000 companies in Singapore Indian Chamber of Commerce. I must say in brief that Singapore, how is the synergy between Gujarat and Singapore could happen? Singapore has the capital, and it has a very high level of technology. What we need is, a very clear land title to work, and the intellectuals. I mean, the professionalism or the professionals of blue and white collar, both workers to work in those SMEs. If through the intervention of the Honorable Minister from the center and from the Honorable Minister, Chief Minister of Gujarat, if we can find a proper synergy between these two, I have been completely mandated from the Singapore side to speak that we are actually totally ready to enter into the MSME market with the MSME people here, and provided these two things could be provided with a lot of ease. We really look forward to work with Singapore. एंड मैंने और जो शुरू में किया था वही अभी भी कह रहा हूँ कि सिंगापुर को तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, अब सब जानते हैं, सिंगापुर हमसे अच्छा जानते हैं. तो अगर यू फील दैट सिंगापुर इज़ योर ब्रदर और अ सिस्टर कंट्री, एंड we in the chamber, in the Singapore Indian Chamber and in the Singapore Business Federation will give any kind of help which is possible from our end to connect the MSMEs here with our large industries and the MSMEs. Why I'm saying large industries?
because the large industries will need the small industries to feed their larger business. So we will introduce you to the both. If the larger industries are much in the SBF, and the smaller industries are most in the SME. But in both these, as Singapore together, with the help of, and we are the Singapore government has sent their very prominent industry people, the enterprise Singapore people with us, in this, and we have this time come for this is the biggest delegation of Singapore to India ever, a business delegation of 30 people. And we are completely ready from both these chambers to work with the MSMEs here. Please give us an opportunity and feel as a brother state and see what we can do with you. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now we would like to invite Dr. Dennis Hu, Director General, Office of International Cooperation, Taiwan Computer Association, on Taiwan MSME Strengths. Your Excellency, Chief Minister Mr. Vijay Rapani, and Your Excellency, Minister of State MSME Government of India, Mr. Giriraj Singh, and all dignitaries on the dais. Good afternoon, Namaste, Kemcho. It's my great honor to participate in today's MSME convention, and I'm from Taipei Computer Association, which is the major ICT industry association in Taiwan, with the 4,000 plus member companies. So we have the 80% of our members are MSME. So you can see now global well-known company like Foxconn, TSMC, and Acer, Azure, Steelink, the well-known company, they are all our member companies. In fact, for those companies, at the very beginning, back to 30 years ago, they are all SME. So, as I have learned, in India, you have 42.7 million MSME companies in India. I think you got a lot of the potential. In the future, you will have the Acer India sort of like a giant company to grow up. I think that in Taiwan, we can, from the ICT industry, we can hand in hand to cooperate in the future. And to serve for this SME, as our data showing that 1.4 million SME in Taiwan, among them, some of the ICT companies, as I mentioned, that is a growth from a very small to a giant company. So for support those the SME development, the government of Taiwan have a lot of the policy to help to support those the SME growth up. And as I saw that Dr. G.D. Vegala, the PPT, and also your video there. In India, you also got a lot of the policy to support the SME growth. I think we can exchange some of those policy initiatives for future cooperation. As from the industry sector, TCA playing a very supporting role to the ICT industry SME. Ever since 1976, TCA was established. So for production value from those companies, our member companies, is cover about 90% of the ICT production value in Taiwan. And ever since 2011, we start to cooperate and to launch some cooperation between Taiwan and India. And there are some of the milestones, and we are looking for some more tangible, solid cooperation in the future, especially in the ICT industry with the Gujarat here. And as you can see on the screen, we have the several milestones ever since 2011. We launched the India-Taiwan Cooperation Forum, and we have some of the activity. For example, we launched the India-Taiwan Startup Alliances and the Twin Dialogue, which means Taiwan-India dialogue via online, on-site, especially to MSME. If you want to travel in long distance, it's costly and spend a lot of time. I think it's a benefit to both
cooperation between Taiwan and India MSME is to take this a convenient way. And also we have to mention that India-Taiwan Cooperation Forum in every year. So this year is the 8th of the ITCF. Conjunction with the exhibition in Taiwan, the Computex, and the Innovex. I think that one is the very important exhibition in ICT Global. Here I sincerely invite the Gujarat industry and the government to take a lead and lead the delegation to come to Taiwan to participate in this year's event. Finally, and last but not least, I would like to thank you to the FITEC, the Federation of IT Association of the Gujarat, for his support and to make a lot of effort for Gujarat ICT industry cooperation with us. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now we invite Dr. Arun Kumar Panda, IAS, Secretary, Ministry of MSME, Government of India. And he's going to speak on strategy for MSME by Government of India. Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Rupaniji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of MSME, Government of India, Sri Giriraj Singh Ji, Honorable Minister, Excellencies, and distinguished delegates on the dais, off the dais, ladies and gentlemen, friends from media. First of all, I would like to really thank the Government of Gujarat for making the Ministry of MSME as the partner ministry in this version of the Vibrant Gujarat 2019. I would like to really express my gratitude on behalf of the Ministry of Government of India that you have given us this chance. And I would also request all of you to please visit the MSME pavilion, the Government of India pavilion, because the Ministry of MSME has put up around 300 stalls, right from the Khadi up to Coir, up to technology centers, up to NSIC, about the tool rooms, and you can find out all those kind of things there. Friends, you will agree with me that perhaps MSMEs is the flavor of the season, as they say. Now, in India, like everywhere we talk about SMEs, small and medium enterprises. In India, we talk about MSMEs, because the micro segment is a very, very important segment in the entire MSME landscape. And they contribute hugely to the entire value chain, to the GDP, to the exports, and most importantly, to employment generation. As you might have seen in the last 1 year or 1.5 years, there has been huge focus on the MSME sector. Not just by the Government of India, but by all state governments and by everyone. Because everyone has realized that if the MSME sector doesn't really develop, and the MSMEs don't develop, it's not going to really contribute to the country's GDP, which as it is, they are contributing hugely to this particular, the GDP, the exports and the employments. As you know, after GST was announced, there is a massive formalization of the MSME sector. Perhaps you would also know that out of 1.17 crore registrations in the GSTN, much more than 1 crore are actual MSMEs. So it means that these MSMEs who are henceforth were in the informal sector are gradually coming to the formal sector, building thereby their credit history and everything thereby so that they can come and they can become a part of the value chain, of the domestic value chain, regional value chain, the national value chain, and international global value chain. Now, what is the size? What is the size of this sector? What is the variety? As per a survey which was done in 2015-16, 63 million there are entities in MSME sector in this country. And thereafter, you know, the much talked about Mudra scheme has come, and many, many such entities have actually come up. So now the numbers would be much more than 63 million in this country. Now what do? They contribute hugely, as I said, to employment, and they actually contribute to equitable growth of this country. Everywhere they are present, unlike the large industries.
Now, what are the challenges? I mean, whenever we meet and discuss, the MSMEs face a lot of challenges. Challenges of timely availability of credit, technology, market access, and availability of skilled manpower. I was asked to talk about what Government of India is doing. Now, Government of India has started lots of initiatives to address these challenges in these very areas. I need not really tell you. I mean, in the video itself, you saw on the 2nd of November, Honorable Prime Minister made 12 historic announcements which would contribute to the ease of doing business, which will actually help in technology upgradation, which has already started helping in credit flow to the MSME sector, and which is also helping in market access. And most importantly, it is actually helping the MSMEs to do business in a much better, easier way. Now, what is this ecosystem? What are the various schemes that I should talk about? Now, there are many schemes, but I need not really get into those details. I'll just say a few schemes. For example, we have a credit guarantee scheme, which has actually undergone quite a number of changes, so that there can be better credit flow to the MSE sector, to the micro and small sector. For example, the credit guarantee scheme fund, which was 2,500 crore, has been enhanced to 7,500 crore. Earlier, it used to be credit guarantee for only credit up to 1 crore. It has been enhanced to 2 crores. Earlier, it was 50% of the credit which was being guaranteed. Now, it has been enhanced to 75% of the credit flow. And more importantly, apart from the scheduled commercial banks, now the non-banking financing companies have been made eligible, so that they can also lend to the people, lend to the micro and small enterprises, yet get the credit guarantee cover under that particular scheme. Prime Minister's Employment Generation Program is a huge flagship program under which this year the entire budget allocation has been more than doubled. So we are now hoping that this year itself, at least 70,000 micro enterprises are going to be set up, giving rise to an employment generation of 5 lakh in this particular sector under this particular scheme in the country. Now, this is a huge jump from the earlier, whenever we used to do around, we are giving less than half. We are giving almost around 1,000 crore or something. This year, it has gone up to 2,300 crore, just the margin money part of it. Then there are many other schemes which have come up, cluster development programs, you see. And mind you, it's not just the Ministry of MSME which is doing for MSMEs. All the other ministries, for example, Ministry of Textiles, Food Processing, Pharmaceuticals, DIPP, and you name them, every ministry has been asked by Government of India that please focus on MSMEs. Agribusiness, how do we do value addition? Because in the agricultural sector, we all know, unless and until these MSMEs do value addition to the agricultural products, the actual income of the farmers, it will be very, very difficult to really take it forward, to kind of double it or triple it. So here is a chance when the ecosystem is being improved so that at least it goes up. Now, lastly, I would say, here we want partnerships with state governments, partnership with industry associations, and partnership with foreign collaborators, so that we can all go forward. Thank you very, very much indeed. Thank you, sir. And now we invite Mr. Lord Marlin, Commonwealth Enterprise and Investment Council, for his speech. Good afternoon, everybody, and thank you very much indeed for giving me this opportunity. The Commonwealth represents 53 countries, the same language, the same rule of law, and a third of the world's population. 60% of the businesses in the Commonwealth are SMEs, so it's incumbent upon us to help SMEs export to each other. It's also noted that it is 19% more competitive to do business intra-Commonwealth. There are 3 ways, having been a business minister myself, that we can help businesses export. One is government incentives, and I congratulate the government of Gujarat for everything they're doing in their tax incentives and creating the ecosystem. The other is where big companies act as mother,
when they go abroad and take the smaller companies with them, or they can use a non-government organization like ours, a loose alliance of 53 countries, to help in that process. And I'm delighted to say that the government of Gujarat, working with FICCI, have recognized that our organization can play that part. And as such, we're going to sign an MOU today with the government of Gujarat to help 60 SMEs export to the Commonwealth in the coming 2 years. And with that, I would like to exchange the agreement with the Gujarat government. Thank you, sir. Thank you so much. And here's the time to exchange an MOUs and signing the MOUs. A very purposeful moments of the function here between CWEIC, IMD and GIDC. The Commonwealth Enterprise and Investment Council, FICCI and GIDC, they are going to exchange the MOU. Everybody put your hands together and let's wish them congratulations and thank you so much. And the second MOU between Tiatra and Gesia. And so that I would like to invite Mr. Jemesh Huang, Chairman, Taiwan External Trade Development Council. Fine. For TCA and FITEG, IMD. Taipei Computer Association, Federation of Information Technology Association of Gujarat and GIDC, they are going to exchange these MOUs. Thank you and congrats. To that CSIR, IICT and GPCB. CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, Gujarat Pollution Control Board and Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Thank you. Now, MOUs between GCCI and international chambers. Arizona Chamber of Commerce and Industry, Mr. Alison Gilbert, Vice President of Strategic Initiative, to Dr. Jaimin Vasa, Ras Al Khaimah Chamber of Commerce, Mr. Muhammad Al Noah, President, and Mr. Durgesh Buch. After that, Indian Chamber of Commerce and Culture in the Slovak Republic, Mr. Rakesh Dharani, President and CEO, and Mr. Hemant Shah. After that, Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry, Mr. Prasun Mukherjee, Vice Chairman, and Mr. Ambar Patel. Netherlands India Chamber of Commerce and Trade, Mr. Rajiv Mehra, Executive Vice President, and Mr. Nilesh Shukla. The MOUs between GCCI and international chambers. 13 MOUs are going to be exchanged. Everybody, please clap and say thank you to all of them. After that, Bhutan Chamber of Commerce and Industry, Mr. Sangai Dorji, Secretary General,
and Mr. Navroz Tarapore. After that, Budwal Chamber of Commerce and Industry, Rupan Dehi, Mr. Khem Bahudar, President, and Mr. Padmin Booch. Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry, Mr. Dinesh Sreshta, President, and Mr. Shrenik Merchant. Canada Indian Foundation, Mr. Pankaj Dave, co-convener, and Mr. Shailesh Patel. BRICS Chamber of Commerce and Industry, Dr. BBL Madhukar, Director General, and Mr. Saumil Purohit. They are exchanging the MOUs, and now MOUs between GCCI and National Chamber. Now MOUs between GCCI and National Chambers, and in that Punjab Chamber of Commerce and Industry, Mr. Nitin Pangotra, Director General, and Ms. Meena Kavya. After that, Krishi Udyami, Krishak Vikas Chamber, Mr. Dalip Sharma, Director General, and Mr. Nipum Jyoti. Here, Ms. Meena Kavya and Mr. Nitin Pangotra, Director General. Lastly, Indian Importer Chambers of Commerce and Industry, Mr. T.K. Pandey, Director, and Mr. Prashant Gandhi. Thank you. दोस्तों, MSME सेक्टर जो हिंदुस्तान के विकास की नींव है और इसी नींव को मजबूत रखने के लिए कटिबद्ध है हमारे ऊर्जावान माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उनका उनके उद्बोधन के लिए। श्री गिरिराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। समय के अभाव की वजह से हम जरा जल्दी चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। और अब जोरदार तालियों से फिर एक बार स्वागत करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी का उनके उद्बोधन के लिए। आज इस समिट के दूसरे दिन, जिसके मुख्य केंद्र बिंदु यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानवर रूपानी जी, मानवर यहाँ के गुजरात सरकार के मंत्री
भाई जेम्स राडिया जी, के जॉर्ज, हमारे विभाग के सेक्रेटरी अरुण पांडा जी, JN सिंह जी, कैलाश नाथन जी, मनोज दास जी, PD राघेला जी, जेम्स छुआंग और मंच पर आसीन देश और दुनिया से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का भारत सरकार की ओर से मैं कोटिशः स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं पहले गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूं कि गुजरात सरकार 2003 से ये निरंतर ग्लोबल समिट की तरह, और जिसके परिणाम क्या निकलते हैं वो आपने अभी देखा कि देश और दुनिया में से आए हुए एक दूसरे के साथ सैकड़ों देशों से आए हैं, हजारों एंटरप्रेन्योर आए हैं। मैं उन सबों का स्वागत करता हूं। आज गुजरात सचमुच में भारत का एक विकसित राज्यों में से है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन अगर गुजरात भारत के टोटल क्षेत्रफल का 6% है तो आप 5% जनसंख्या भी है, लेकिन ये क्षेत्रफल और जनसंख्या से GDP में ज्यादा है, 8% है, और एक्सपोर्ट में भी 20%। ये गुजरात आज पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए एक माइलस्टोन की तरह लोगों के सामने में है। आज कोई इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा, रबर, प्लास्टिक, सारे प्रोडक्ट, चाहे अन्य जो भी यहाँ इंडस्ट्री है, वो क्लस्टर के रूप में। मैं आज आपके सामने, मेरे विभाग के सचिव ने सारी बातों को रख दिया है, और देश आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। ठीक ही कहा कि पूरी दुनिया में SME है, लेकिन भारत के अंदर MSME है। अभी तक तो 15-16 के अनुसार हम कहते थे 63 मिलियन, लेकिन अगर मैं मुद्रा में जो प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 15 करोड़ लोगों को ऋण देने का काम किया है, और ये 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। भारत के अंदर ये 4 साल में 15 करोड़ मुद्रा, जो जीरो से लेके हीरो तक उनको उठाने का काम किया है, लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन जो छोटे छोटे, मैंने माइक्रो की बात कहा, उस माइक्रो को एक आदमी से लेकर के 10 आदमी तक का रोजगार देने वाला ये माइक्रो है। आज से 2 दिन पहले मैं इंदौर में मध्य प्रदेश में था। मैंने देखा वहां एक महिला माइक्रो से शुरू करके आज 700-800 करोड़ की कॉन्फेक्शनरी उद्योग में जा चुकी है। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री ने पहली बार पूरे देश में MSME को एक उस ऊंचाई पर ले जाने का काम किया जिस ऊंचाई पर आज तक भारत कभी MSME को किसी ने ले जाने का काम नहीं किया था। पूरी दुनिया में कहीं कहीं तो 96% MSME है, लेकिन भारत के अंदर आज भी आर्थिक रीढ़ MSME है। हम आज अगर बढ़ती हुई तेज रफ्तार से इकोनॉमी को, भारत के इकोनॉमी को पूरी दुनिया देख रहा है,
हम 5वीं स्टेप पर जा रहे हैं। अगर दुनिया में 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो फिर कहीं 5वीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर लोगों की नजर है। भारत कहीं उससे पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए विभाग को इंस्ट्रक्शन दिया कि देश का कोई ऐसा राज्य ना बचे जहां टेक्नोलॉजी सेंटर ना हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से ही पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी, दूसरों की टेक्नोलॉजी नहीं, सिंगापुर की टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार चाहिए। हम उनका नकल नहीं करेंगे, लेकिन जो मुझे आवश्यकता है वो करेंगे। आज मैं आपको बताऊं कि जब कह रहे थे सेक्रेटरी चरखा से चंद्रयान, आज मेरा टेक्नोलॉजी सेंटर देश के उद्यमियों को, जो एंटरप्रेन्योर हैं, हम टेक्नोलॉजी देते हैं, डिजाइन देते हैं। जो चंद्रयान बन रहा है उसमें एमएसएमई का 60% योगदान है। जब मैं कहता हूं चरखा से चंद्रयान तक, लोग कहते हैं कि चरखा कोई नई चीज थोड़े ही है। चरखा इसी धरती, परम पूज्य गांधी जी की धरती है। गांधी जी ने चरखा को कभी केवल मैनचेस्टर के कपड़े का बहिष्कार नहीं रखा था, बल्कि आधी आबादी के हाथ में अर्थ का उपादान दिया था। मैकेंजी ने कहा कि चाइना आज अगर ग्रो कर रहा है, उस 42% उसने महिलाओं की भागीदारी रही। गांधी जी आज शुरू से, उस समय आजादी के पहले से चरखे को महिलाओं की भागीदारी को माना था, लेकिन सत्ता जिनके हाथ में मिला उन्होंने गांधी का तो उपयोग कर लिया, लेकिन चरखा को वही छोड़ दिया। आज एमएसएमई ने चरखे में हमने टेक्नोलॉजी डाला। सर्वप्रथम उसे सोलर से चलाया और लोहे के बदले अब डिजाइन कर रहे हैं कार्बन से। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट करा रहे हैं। कहां करा रहे हैं? जहां 150 वाट का पैनल लगता था सोलर चरखे में, वहां आज 30 वाट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए चरखे में, लेकिन मेरे अनुसार चाहिए। वो काम हमने की। हमने उसमें एक छोटा सा कैमरा दिया कि गांव की औरतें अगर घर में काम कर रही हों तो स्पिनिंग का काम उस चरखे से होता रहेगा। अगर टूटा तो उनके मोबाइल पर बीप करेगा। तो आज चरखा में भी हमें टेक्नोलॉजी इसलिए चाहिए कि मुझे चरखा जरूरत है। तो चरखा से चंद्रयान तक, गांव टू ग्लोबल हमारे प्रधानमंत्री का ये थीम है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई ऐसा स्टेट ना बचे। 69 में से ये टेक्नोलॉजी सेंटर केवल 18 थे, जिसकी चर्चा अभी हमारे सेक्रेटरी ने की। 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर हमने स्थापित की, सैंक्शन की। और केवल सैंक्शन नहीं की, केवल शिलान्यास नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि शिलान्यास जिसका हो उसका उद्घाटन भी हो। तो आज हम 15 में से 10 का ऑपरेशनल फरवरी तक करने जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हुआ। फिर प्रधानमंत्री ने कहा यह भारत एग्रो बेस है, एग्रो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। अभी हम पूरे देश में कम से 2000 जैसे साइकिल के चक्के में हब और स्पॉक की भूमिका होती है, हम टेक्नोलॉजी को देश के अंदर एक हब में 100 स्पॉक होंगे जो एग्रो बेस होगा, क्योंकि भारत एक एग्रियन कंट्री है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में भारत की गति रुकेगी नहीं। वर्ल्ड बैंक ने अगर कहा कि भारत की इकोनॉमी आज 2.8 ट्रिलियन है, आने वाले दिन में हम 5 ट्रिलियन पर जाएंगे। और 5 ही नहीं,
जब हम दूसरे पावदान पे आएंगे 2030 तक, तो 10 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी। ये नीतियों के कारण होता है। नीतियां तो, नीति और नियत दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। जब ये कह रहे थे सिंगापुर का जीडीपी इतना है, तो मैंने कहा मन में कि मुखर्जी साहब, सिंगापुर में दिल्ली नहीं है, दिल्ली में जंतर मंतर नहीं है, जहां कोई नीतियां बना दे तो जाके विरोध कर दे। आपके पास जंतर मंतर नहीं है सिंगापुर में, चाइना में जंतर मंतर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को ये जंतर मंतर पर जाकर के लोग चिल्लाने वाले, आज भारत को चाइना से भी आगे ले जाने का काम आज कर रहे हैं। आज फास्टेस्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी है हमारा 7.5 इसी देश के अंदर। मैं नहीं जानता कि मेरे बात से भारत के एंटरप्रेन्योर कितना सहमत होंगे, कितना असहमत होंगे। हमने कई ऐसे समय को झेला जो कभी हमने सोचा नहीं था। डिमोनेटाइजेशन हमने सोचा नहीं था, हमने जीएसटी को सोचा नहीं था, लेकिन आज देश के सारे एंटरप्रेन्योर को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने साथ दिया भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री के नीतियों को। और साथ देने के बाद कुछ लोग जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अपने को एक्सपर्ट करते कहते थे, इस देश के सियादान पे उच्चस्थ पद पे रहने वाले लोगों ने कहा था, जिस समय जीएसटी की बात हुई थी, कहा था 2% से ज्यादा जीडीपी नहीं रहेगा भारत का। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 7.5% का ये ग्रोथ रेट आगे भी चलता रहेगा। ये प्रधानमंत्री की नीति और नियत। जीएसटी में भी मैंने कई बार कई उद्यमी समूह से मिलते थे, यहां बैठे भी हैं, भाई इसे प्रोडक्ट को इस पर ये करना चाहिए, ये 28 नहीं 18 आना चाहिए, 18 नहीं 5 आना चाहिए। मैं बार बार कहता था कि प्रधानमंत्री ने कहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि मैं हर वो कदम उठाऊंगा जो एंटरप्रेन्योर के हित में होगा। और आज हम प्रत्येक जीएसटी के मीटिंग में अभी भी जो कोई तकलीफ होगी, उन तकलीफों को भी दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि जीएसटी के लिए उद्यमी नहीं, उद्यमी के लिए जीएसटी है। इसीलिए आज भारत के प्रधानमंत्री के नीति और नियत दोनों का समावेशी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अति प्रसन्न हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये समिट रखा है, अब पूरी दुनिया से लोग आए हैं, इससे जो देश को फायदा मिलने वाला है। एमएसएमई हमने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ही केवल नहीं, फिनेंशियल इंक्लूजन में ही नहीं, पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमएसएमई डिपार्टमेंट ने जो कदम उठाया, 3 मिनट में कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी अपने मोबाइल ऐप से। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पहले लोगों को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता था, उन्हें चक्कर लगाना पड़ता था, कभी गेंदे का फूल के साथ जाना पड़ता था, कभी गुलाब के फूल के साथ। लेकिन हमारी नीतियों के कारण किसी को न गुलाब का फूल लेना है न गेंदे का फूल, उन्हें तो अपने ही मोबाइल पर अपने ही बटन दबाना है और 3 मिनट में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमएसएमई के लिए जो सेंट्रल सीपीसीज हैं, वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट करते हैं। भारत सरकार ने, एमएसएमई डिपार्टमेंट ने, हमने 3 पोर्टल लाया, 2 पोर्टल, जिसके कारण आज देश के अंदर उद्यमी कहते थे साहब हमारे पेमेंट नहीं होते। हमारे सेक्रेटरी, हमारा विभाग ने
ऐसा पोर्टल हम बनाए कि प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, सारे विभाग के लोग भी देख रहे हैं, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर का पैसा 45 दिन में नहीं देगा उसकी रेटिंग भी गिर जाएगी, इसलिए पैसे भी मिल रहे हैं। एमएसएमई ने कहा कि साहब मुझे पता नहीं चलता कि सीपीएसई के कौन से पैरामीटर में कौन सा प्रोडक्ट अगले बार मांगेगा। हमने कहा अपने पोर्टल पर रखो। मैं इतना जानता हूं कि देश के अंदर ये एमएसएमई विभाग, हम उन सारे कदमों को उठाने के लिए तैयार हैं जो कदम एमएसएमई को बढ़ाने में योगदान देगा। आज डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, अगर 18 लाख एंटरप्रेन्योर को 2010 से 2014 में केवल सीजीटी एमएससी में 11 लाख एंटरप्रेन्योर को फिनेंशियल इंक्लूजन हुआ था। हमने 14 से 18 में 18 लाख एंटरप्रेन्योर को दिया, 2 लाख पीएमईजीपी में। अगर मैंने इतना सब विभाग ने की तो देश के नौजवानों को रोजगार भी मिला। अगर कोई खोलता है 1 करोड़ का 50 लाख का कोई एंटरप्रेन्योर, तो कुछ ना कुछ तो कोई ऑपरेटर, कोई सेल्समैन, कुछ ना कुछ तो लोगों को रोजगार देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं, मैं पूछता हूं। अगर देता है तो हमने दी। और अंत में अंतिम बात कह करके कि देश के अंदर अगर रोजगार देता है तो एमएसएमई देता है, लेकिन जब किसी मंच पर मिले, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये फलाने हाउस हैं देश के, उनसे लोग हाथ मिलाते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि ये मेरा एमएसएमई है तो लोग कहते हैं अच्छा। मैंने 2016-17 में शुरू किया। मैंने कहा कि रोजगार देने वाला अगर कोई है तो एमएसएमई है, इसलिए इसका सम्मान भी होना चाहिए। और उस सम्मान के लिए जब मैंने 2 कंपनी को, एक तो अपने एनएसआईसी को कहा, मैंने पूछा कि उनकी दिक्कतें क्या है। मैंने कहा एक परफॉर्मा बनाओ, उस परफॉर्मा में उनके सारे जो भी प्रॉब्लम है उसका कॉलम बनाओ। केवल मेरे तरफ से एक कॉलम बनाओ, उनसे पूछो कि एडवांस वर्क फोर्स का बजट बनाते हैं क्या, कि अगले 18, 19, 19, 20 में कितने लोगों को हम रखेंगे। 95% लोगों ने कहा कि मैं ऐसा कोई नहीं बनाता, जब मुझे जरूरत होती उतने स्टाफ को रखता। मैंने कहा मेरी विनती है आप इस पर तुम उनसे राय ले लो, आपको जान के खुशी होगी। लाइव मैंने लिया 15,000 एंटरप्रेन्योर से, बहुत छोटा सा सैंपल है, उसमें 26% लोगों ने कहा कि 18-19 का लिया था कि मैं कोई एक भी वर्क फोर्स इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन जो 74% था सबको मिला दिया तो 7.8 आया। आज जीएसटी में 1.16 करोड़ है, इसमें 10% अगर छोड़ दें तो सबका सब एमएसएमई ही है। तो अगर ये हुआ 7-8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोग देश में अफवाह फैलाते, और आज एमएसएमई केवल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ही नहीं, हम सबसे माइक्रो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था 25 लाख रुपया ले लिए, आप सक्सेसफुल काम किया, लेकिन आपको फिर कोई स्कीम नहीं। हमारा डिपार्टमेंट ने कहा कि इसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ और देंगे, 25 लाख के बदले उस पर सब्सिडी भी देंगे। मेरे भाइयों, मैं देश में समय की कमी है, नहीं तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार, एमएसएमई डिपार्टमेंट, हम अब काम कर रहे हैं डेफिसिट प्रोडक्ट। जो लोग कहते हैं कि देश के अंदर चाइना से सामान आ रहा है, हम कंपीट नहीं कर रहे। लोग कहते हैं एक दिन रुपये का डॉलर से गिर जाए तो लोग, बड़े लोग भी कहते हैं भाई देखिए रुपया का वैल्यू तो गिर गया डॉलर का। मैं देख रहा था चाइना का रेट
-4.3 गिरा। तो अब हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से एक नया शुरू करने जा रहे हैं, डेफिसिट ऑफ प्रोडक्ट। कौन ऐसा प्रोडक्ट है जहां जो बाहर से आ रहा है और भारत के अंदर हम कंपीट नहीं कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मेरा थीम है, गांव टू ग्लोबल, चरखा टू चंद्रयान। यही मेरा है, नौजवानों को रोजगार देना, नीति और नियत को साथ करना। प्रधानमंत्री का नीति और नियत साथ चल रहा है, इसलिए देश में एमएसएमई को कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिन में ये एमएसएमई को ही लोग पूजेंगे, क्योंकि यही रोजगार देने वाला एक एंटरप्रेन्योर, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा है जो लोगों को रोजगार देता है। बड़े उद्योग से रोजगार नहीं मिलता, छोटे उद्योग से ही रोजगार मिलता है। मैं आज मुख्यमंत्री जी को फिर कोटिशा धन्यवाद देता हूं और आए हुए प्रतिनिधियों का धन्यवाद देते हुए बाहर से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गुजरात राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल यहाँ पधारे हैं, स्वागत करते हैं उनका। एक विशिष्ट रूप से मोमेंट अर्पण कर स्वागत करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल का। MSME કન્વેન્શન વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત આપણી વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અત્રે પધાર્યા છે, તેઓનું સ્વાગત મોમેન્ટ અર્પણ કરીને। आवा ज उद्योग साहसिको एक विशिष्ट मोमेंटो अहींया अर्पण करी रह्या छे माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल ने आपणे सौ जोरदार ताळीओथी વધાવીશું माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री ની उपस्थिति ने MSME कन्वेंशन अंतर्गत। बहुत बहुत स्वागत है माननीय नितिन भाई पटेल जी का, उप मुख्यमंत्री गुजरात राज्य। और समय के अभाव से वो आप सभी को संबोधन नहीं कर रहे हैं, पर आज जब हमारे बीच इस MSME कन्वेंशन में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं, तो कुछ ऐसे उद्योग साहसिकों को हम यहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने उद्योगों में कुछ विशिष्ट सिद्धियां हासिल की है। Here is the time to give an awards to MSME industrialist. Thank you so much sir and welcome sir. અને હવે એવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને આપણે એવોર્ડથી સન્માનિત કરીશું, અને એના માટે સૌપ્રથમ વિનંતી કરીશ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને સાથે માનનીય ઉપમુખ્યમંત્રીશ્રીને તેઓ એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરશે આ ઉદ્યોગ સાહસિકોને, જેમાં સૌપ્રથમ છે બોમ્બે સુપર હાઇબ્રિડ સીડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રાજકોટથી મિસ્ટર અરવિંદ કુમાર જે કાકડિયા. ગ્રોથ ઇન પ્રોડક્શન એન્ડ પ્રોફિટ initiated seed business in 2005 under the name of Bombay Super Hybrid Seeds. The value of the company expanded from 9 crores to 105 crores. Infrastructure of the company is surrounded in 1,50,000 square feet of area, which includes fully equipped processing unit along with self-owned cold storage. We heartily congratulate Bombay Super Hybrid Seeds Private Limited for winning an MSME award in growth in production and profit. Please come on the stage. Mr. Vasa Pharmachem Private Limited, Dr. Jaimin Vasa. Vasa Pharmachem Private Limited was established in 1988 and has emerged as one of the leaders in manufacturing minerals-based ingredients and excipients for pharmaceuticals, food and beverages. Today the company has 2 modern manufacturing facilities located in Ahmedabad and Dhodka with scientifically defined management system. We heartily congratulate Vasa Pharmachem Private Limited for winning an MSME award in growth in production and profit. He's going to get 2 lakh rupees trophy and certificate here. Congratulations. Growth in production and profit. Mehsana se hai Ambika Alloys and Steel Industries, Steel India Limited. Ambika Alloys and Steels India Limited was born in 2007. It became the first company to build the first fully automatic re-rolling mill in Gujarat. The company manufactures MS Beam, MS Channel and MS Angle.
The अभिवादन annual करवा turnover आवश्य of the company has reached 2,000 crore rupees and the production has reached 55,000 metric tons. We heartily congratulate Ambika Alloys and Steels India Limited for winning an MSME award in growth in production and profit. Congratulations. Messrs. Rama Gum Industries Limited, Banaskantha thi, Chair Mr. Mitul Babulal Shah. Rama Industries was founded in 1989. Rama Gum Industries Limited is known for maintaining quality standards parallel to the highest in the industry. The company has an effective quality control system and their laboratories are fully equipped. The company has trained chemists to supervise production process. We heartily congratulate Rama Gum Industries Limited for winning an MSME award in Best Quality and Environment Improvement Measures. Congratulations Rama for quality and environment improvement measures. And for the same, Zenitex from Surat, Mr. Viral Sudhir Bhai Desai. Zenitex was established in 2003 in Surat. Under the great leadership of CEO Mr. Viral Desai, 2 lakh rupees the goal of the cash company prize, is to trophy contribute in and such a way certificate. that goes beyond mandatory requirements and delivers environmental benefits. The company has been taking care of more than 21,000 trees and plants. We heartily congratulate Zenitex for winning an MSME award in quality and environment improvement measures. Congratulations Zenitex. And after that, Mega Fine Pharma Private Limited, Valsad se Dr. Divyesh Joshi for innovation in technology for new product Group's and process. first company was started in 1980 by a technical entrepreneur, Shri Ashok K. Javeri. The company had signed an MOU for 2 major activities. The company will be providing new clean room facility for pharma block for zero contamination. The company will also be providing in-house bigger effluent treatment facility. We heartily congratulate Mega Fine Pharma Private Limited for winning an MSME award in innovation in technology for new product and process development. Many congratulations Mr. Divyesh. After that, Agriland Biotech Limited from Vadodara, Mr. Mukesh J. Patel. Agriland Biotech Limited was established in 1994 and right from inception, the company has been showing good working results. Under the leadership of Mr. Mukesh Patel, the company has not only framed different strategies to develop various products, but has also won various prestigious awards. We heartily congratulate Agriland Biotech Limited for winning an MSME award for Best Entrepreneur at regional level, Central Gujarat region. Thank you. And now Ms. Jepson Foods from Bharuch, Mr. Satyanarayan Agrawal. Japson's Foods Private Limited was launched in 1985. Having vast experience in procurement of quality groundnuts, Mr. Satyanarayan Agrawal visualized the need of hygienic manufacturing and packaging. Mr. Rahul Agrawal, son of Mr. Satyanarayan Agrawal, handles the marketing department of the firm. The company has grown from local to a global one. We heartily congratulate Japson's Foods Private Limited for winning an MSME award for Best Entrepreneur at regional level, South Gujarat region. Reach in traditions. And now expert awards. In that, first of all, New Age Firefighting Corporation Limited from Surendranagar, New Ms. Age Sujal Shah. Firefighting Company Limited was founded by Mr. Mahatma K. Shah in 1961 and it now has a rich and varied experience of more than 55 years in manufacturing fire equipment and vehicles. The company exports to more than 50 countries across the globe. We heartily congratulate New Age Firefighting Company Limited for winning an award for manufacturing exporter from MSME in engineering and electrical products. And now, Petson Foods India Private Limited from Navsari, Mr. Suraj Bhai Sabalia. New Age Firefighting Company Limited was founded by Mr. Mahipat K. Shah in 1961. Petson Foods India Private Limited started its run in 2003. The company exports various frozen food products like fruit pulps, pickles and chutney, jams, jellies and syrup, canned vegetables, etc. to overseas markets. We heartily congratulate Petson Foods India Private Limited for winning an award for manufacturing exporter from MSME in frozen and tin packed products.
High Shine Inks Private Limited, Navsari, Mr. Nitin C. Mehta. Mr. Nitin Mehta gave birth to High Shine Inks in 1984. High Shine manufactures various kinds of writing inks. The company has won prestigious export award for 20 successive years since 1998. High Shine ink is used by most of the pen brands across the globe. We heartily congratulate High Shine Inks Private Limited for winning an award for manufacturing exporter from MSME in inks. Vidya Wires Private Limited from Anand, Mr. Shyam Sundar Rathi. Vidya Wires Private Limited was founded by Mr. Shailesh S. Rathi in 1982. For the last 37 years, the company has been serving to the small, medium and large industries. The company exports their products to more than 20 overseas countries. The company has made commendable achievements and is honored with various prestigious awards in the last 10 years. We heartily congratulate Vidya Wire Private Limited for winning an award for manufacturing exporter from MSME in engineering and electrical products. Thank you. And now Valencia Ceramic Private Limited from Morbi, Mr. Harshad Bhai Patel. Valencia Ceramic Private Limited and is one of the leading digital walls tiles manufacturing and exporting company in India. The company produces thousands of designs with various styles and series. The company is constantly innovating new ideas, examining and taking advantage of new technologies to optimize production process. We heartily congratulate Valencia Ceramic Private Limited for winning an award for BC manufacturing Instruments India exporter Private from Limited MSME from in Anand. mineral and minerals-based products. BC Instruments India Private Limited from Anand, Mr. Sunil Dave. Thank you so much. Instruments India Private Thank you. Limited was incorporated And in many, India many by the congratulations. Canadians and the Indians सभी for उद्योग manufacturing साहसिकों को। high precision machining of components, exporting to various countries. It is the only company from Gujarat manufacturing Please and stop. exporting components to aviation industry. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે સમયના અભાવે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિદાય લઈ રહ્યા છે અને આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી છે फॉर दिस MSME कन्वेंशन. इस MSME कन्वेंशन की सफलता के लिए आप सभी को शुभकामनाएं दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ने और सभी महानुभावों ने. समय की व्यस्तता के वजह से वो आप सभी को संबोधन नहीं कर रहे हैं. हम तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का. हृदयपूर्वक आभार माननीय मुख्यमंत्री श्रीनो, माननीय नायब मुख्यमंत्री श्रीने तेओ અત્યારે પધાર્યા. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2019 MSME કન્વેન્શન. We feel really glad and honored to have a valuable presence of Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Rupani ji, and Honorable Deputy CM of Gujarat, Shri Nitin Bhai Patel. Thank you so much once again, everybody. And everyone are requested to please join us in Seminar Hall 3 for the seminar. Jilla Udyog કેન્દ્રોમાંથી તથા ઉપસ્થિત તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ Seminar Hall 3 માં ઉપસ્થિત રહેશે for the next session of seminars. Thank you once again. ફરી એકવાર હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો, માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીનો.